So last weekend, I went for an adventure camp on an island with my friends. This is one of those very less explored places of our country. So come, join me and experience my travel. This is day 2 on this beautiful island with Invincible. This has to be the most beautiful dawn I've ever seen. The amazing tones in the sky just before the sunrise, the sounds of the waves hitting the shore, the chirping of the birds telling us that a new day has begun just made it so dreamy and beautiful. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है आज। तो हम लोग ने टेंट से निकले और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ब्रश वश किया। अभी मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ का जो डाइनिंग एरिया और मतलब जो भी कहो आप चिल आउट एरिया का व्यू एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करने ले जाता हूँ। ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर अपने कैंप साइट पे जाएंगे। मैं आपको कैंप साइट दिखा दूँगा। सो गाइस, ये हमारी कैंप साइट थी। अभी पैकअप हो रहा है तो काफ़ी टेंट्स निकाल दिए, बट लेट मी गिव यू अ सिनेमैटिक व्यू ऑफ दिस। Down at the beach now. The water is so clean, like it's giving the true color of water, blue, and it's looking very beautiful. And the sand here is so soft, like the legs just go inside the sand once the water comes on it. It's very beautiful and the atmosphere is so good. Mornings are always very nice at the beach. तो अब टाइम हो गया था आइलैंड छोड़ के जाने का। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर क्या करें। सो हम डॉल्फिन सफारी के लिए निकल रहे थे, तो हमें फॉल इन कराया गया एक ग्रुप फोटो के लिए। और we are about to leave this island, but before we leave this island, we're going to do one thing. We're going to clean the beach. This is our moral responsibility to clean the beach once we leave the beach, because nature has given us so much, and what we give in return to nature is this garbage. This is not really fair. So I and all the camp members here will do our thing and we'll try to clean the beach. Guys, treat this like your duty. Clean the mess that you made on the beach or whichever place you're visiting.
because if we don't preserve this, no one else will. If you do not have a dustbin, you could just keep it aside so that even it's organized mess. It's easy to clear, no? Guys, this is a very beautiful beach. I just don't feel like leaving it. So we left the island. It felt really bad to leave that place. But then this is how it is in life. We gotta let go of places, people, things when the time comes. But we never really leave the place that we love. We always take a part of it with us and leave a part of ours there. So was the case with me. So अब हम बड़ी बोट में ट्रांसफ़र हो चुके थे एंड डॉल्फिन सफारी के लिए निकल गए थे. लंच जो था वो हम लोग बोट पे ही करने वाले थे. ज़्यादा हो चुका है, हम लोग अभी तक बोट में ही हैं. तो आई एम नॉट श्योर ये डॉल्फिन सफारी इसी तरह से होने वाली है या हमें कोई पॉइंट पे लेके जाएंगे, फिर वहाँ से विल बी लुकिंग फॉर डॉल्फिन. तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट बाकी बोट पे बहुत चिल आउट सीन्स है. गरबा चल रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग्स में डांस हो रहा है, सब एकदम मस्त. बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज मैं यहाँ पे एक्चुअल सॉन्ग नहीं डाल सकता. But I'll leave it to you guys. So guess the song and put down in the comment section. Let's see कौन guess कर पाता है. Although it's an easy one. तो इस आइलैंड पे एक स्ट्रिप है जिसका नाम डनी पॉइंट है. तो उस पॉइंट के दोनों साइड पे पानी का कलर अलग है. लाइक एक साइड काफ़ी ब्राउन है जैसे आप देख सकते हो और दूसरी साइड काफ़ी ब्लू है. और गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे जाना अलाउ करना बंद कर दिया. आफ्टर लुकिंग फॉर डॉल्फिन्स फॉर ऑलमोस्ट 3 hours we came back to Okha. नहीं देखने मिली डॉल्फिन्स. विद अ हेवी हार्ट हम निकल गए एंड सोचा कि अगली बार देखेंगे. And we headed out towards Dwarka Mandir. हमारा एक बीच पे जाने का प्लान था जो कि हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही गया था. तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया. तो अब हम जा रहे हैं द्वारका टेम्पल में. होपफुली वो खुला होगा, ऐसा सुना है कि 9 o'clock तक खुला होता है. बट देन हम जाते हैं, वहाँ पे द्वारका बीच भी है पीछे. तो अगर टेम्पल बंद होता है तो हम लोग द्वारका बीच चले जाएंगे. तो अभी तो द्वारका की रोड्स पे चल रहे हैं हम. रात की हमारी ट्रेन है बैक टू अहमदाबाद. So we'll reach around 6 in the morning. तो मोबाइल्स अलाउड नहीं थे यहाँ पे. तो अब हम यहाँ पे ऐसे ही मोबाइल और सब बाहर रख के ऐसे ही अंदर चले गए थे. मैं बाहर से ही Daumil, what are you having?
having nothing. I'm just waiting for my sugarcane juice. Sugarcane as the saying the breast. Waiting for my sugarcane. Sugarcane. That's the Okha. That's Okha. That's Okha.